Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. Children, we are carrying on with the revision of chapter 3, Nazism and the rise of Hitler. A lot of things we will be understanding about Nazism and Hitler and his policies. Children, we have to understand that in Germany, got it? In Germany, during the time of Hitler, big changes had happened. In Germany, of course, big changes had happened, but these changes were witnessed all over the world as well. It had an impact on the other parts of the world also. तो जहाँ पे हमने रोका था in the last video where we had stopped, children, we were talking about establishment of Weimar Republic. Students, Weimar Republic was established. The emperor was abdicated. First World War had ended and Germany was defeated. And हमने जहाँ पे रोका था, there I was saying that the people were not very happy. Of course, अगर हम the people who are really dedicated to the country और वो really want to see क्या, अगर जिस भी country में रह रहा है, क्या हम उसकी हार बर्दाश्त कर सकते हैं? No, we cannot. We cannot tolerate the defeat of the country from any other country's hand. किसी भी country के हाथ से defeat हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. So when we cannot accept defeat from any other country, so how was it possible? How come it was there that now, no, we need to understand this very properly. Ki Germany, when it was defeated and the emperor's rule was over, Weimar Republic was established. So it was the responsibility of Weimar Republic to see and to take care that the dignity of the people of Germany wouldn't have been compromised on. Got it? The way Weimar Republic had compromised. कहाँ पे compromise किया? Yes. That is what we are discussing here, children. अभी हम वही चीज़ डिस्कस करना जा रहे हैं कि Germany's war at the end of the First World War had happened. Peace treaty was there at Versailles. Peace treaty है ना. कोई भी लड़ाई जब चल रही है, लड़ाई जब खत्म होती है, उसके बाद the countries which are in war or which were under war, they have a trade. They sit together and they decide on how the things are to be solved. काफी लोगों का नुकसान हुआ रहता है, तो ये देखा जाता है कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, how it has to be looked after, and this is where is the problem arises. ठीक है? We are right now talking about Treaty of Versailles. Got it? Children, please understand. Versailles was the place जहाँ पे कि in Germany, of course, जहाँ पे कि the allies and the central powers, the winners and the losers, they were sitting together and एक peace treaty sign की गई कि चलो now we are not fighting, अभी further और लड़ाई नहीं होगी and everything has to come to a rest. लेकिन this harsh treaty had imposed lot of allegations on Germany. सारा वॉर का जो नुकसान है वो लोगों ने जर्मनी से वसूल किया. I was telling you that the First World War had laid down the seeds of the Second World War. Germany, all the colonies that Germany had occupied, it has lost its colonies and 1/10 of its population. 1/10.
मतलब quite a large number of people had died. Okay. अब what was Treaty of Versailles? Treaty of Versailles में पहला पॉइंट ये है, it lost all its colonies. सारी कॉलोनीज से इनको हाथ धोना पड़ा. Then please understand 13% of its territories. 13% of its territories. %13. आप सोचो हमारी कंट्री का कोई इतना सभी लैंड ले ले, हम बर्दाश्त करेंगे? वी कैन नॉट. एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज वॉज टेकन. 75% of iron, 26% of its coal they have to give to France, Poland, Denmark and Lithuania. How can any country accept that कि वॉर हुआ है और वॉर का सारा खर्चा हम दें? लेकिन they were not in a condition to say anything. Okay, 13% of its territories they have lost. 75% of iron, 75% of iron, and because you are losing your territory plus you are giving all your resources also. 26% of its coal, 26% of its coal to किसको दिया इन्होंने? They gave it to France, Poland, Denmark and Lithuania. France, Poland, Denmark and Lithuania. सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल लैंग्वेज. सब लोगों को अपना लॉसेस का खर्चा, मतलब वॉट एवर लॉसेस हैड हैपेंड, दे ऑल वांटेड दोज लॉसेस टू बी repaid or to be paid by Germany. Imagine losses on such a large scale and Germany has to pay all that losses. Allied powers, they demilitarized Germany to weaken its power. पूरा मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया. तो मिलिट्री वॉज डिसबैंडेड. इमेजिन somebody comes and tells there is no more army in your country now. आपकी सारी आर्मी को जो है सबको घर वापस भेज दो, कोई हमको आर्मी नहीं चाहिए. इमेजिन, कैन वी टॉलरेट? ठीक है, थिंक उस सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचो हाउ ह्यूमिलिएटिंग इट इज. ठीक है, दैट्स व्हाई मेनी अ टाइम्स इट वाज सेड दैट इट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी. आप पीस ट्रीटी साइन कर रहे हो कि बेइज्जत में बेइज्जत किए चले जा रहे हो? Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. उसकी पावर को पूरी तरह, मतलब एक होता है ना, इट वॉज लाइक, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? इट इज लाइक कि जर्मनी को बिल्कुल अपने घुटनों पे लेके आना है. जर्मनी को इस तरह से कर देना है ना कि दैट जर्मनी विल फील कि ओ गॉड, इट वाज सच अ बिग मिस्टेक दैट वी पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, वी वुडंट हैव पार्टिसिपेटेड. हमको तो वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था. इमेजिन सच अ ट्रीटी. Okay, war guilt clause held Germany responsible for the war and damages. सब ने मिलके जो है जर्मनी के ऊपर अटैक किया. ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व सारे थे. एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व, एवरीबडी वॉज स्पेंडिंग देयर ओन रिसोर्सेज. उस समय नहीं सोचा कि इतना नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा. एंड नाउ व्हेन दे सॉ दैट जर्मनी वॉज इन अ वेरी वीक पोजिशन, दे इम्पोज्ड ऑल देयर थिंग्स ऑन जर्मनी. ओके, so Germany was held responsible for the war. Got it? Big thing. और इनको ये कहा गया कि अब जो है
War may, whatever has happened in the war, it was only the responsibility of Germany. Okay? Allied countries suffered. Okay, whatever suffering was there of the allied countries and the losses that were there, Germany was held responsible for that. Germany was forced to pay compensation of 6 billion pounds. Germany was forced to pay, please understand, forced to pay war compensation of 6 billion. ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है 6 बिलियन, वो उन लोगों की जो करेंसी थी. Okay, 6 billion pounds Germany has to pay. Allied armies occupied the resource rich. अभी क्या होता है in some countries like Germany में there was one area Rhineland. Like in India there are many areas which are very rich in resources. Very rich in resources. So if somebody occupies it, will we tolerate it? But no. Germany was, allegations were put and it's a very resource rich area. Rhineland was occupied. Okay. So Allied powers occupied resource rich Rhineland. Got it? Resource rich, ठीक है, iron, magnesium and all kinds of resources that are needed, it was there. And many Germans held the Weimar Republic responsible for that. They said, because वहाँ पे कौन, there was no emperor at that time. There was constitution made and democracy was established under the leadership of Weimar Republic. सो वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए एंड दे सेड कि ओके ठीक है, वी विल गिव द वॉर रेपरेशंस, जैसा आप लोग कह रहे हैं हम करने के लिए तैयार हैं. क्यों करने के लिए तैयार हैं? दैट इज व्हाट द जर्मन्स फेल्ट बैड अबाउट. आई टोल्ड यू ना दैट जर्मन्स वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द वीमर रिपब्लिक. द वे वीमर रिपब्लिक हैड सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द एलाइज के सामने जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, उनकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द जर्मन्स. Germans were very rejected and dejected by this policy. Got it? So this was a thing that had really troubled the Germans and they held Weimar Republic responsible for that. इन्होंने कहा वीमर रिपब्लिक को इस तरह से when all the harsh treaty was being imposed, तो वीमर रिपब्लिक shouldn't have kept quiet. उनको मना करना चाहिए था. हर एक चीज को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? Why did they accept each and everything? They should have retaliated कि नहीं हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे? Got it? So Weimar Republic at that time, their quietness and their surrender to the powers was a very, disturbing thing. Got it? And आगे की चीजें जो है ना, that was a tough challenge for the Weimar Republic. गवर्नमेंट बना दिया, इलेक्शंस भी कर दिए एंड पीपल हैड वोटेड ऑल्सो, सारी चीजें हुई. बट वीमर रिपब्लिक एंड इट्स रोल इन द फर्स्ट during the signing of the Treaty of Versailles was criticized by one and all. सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा criticize किया. Children. तो this was all about. Now the First World War, its effect. जर्मनी की बात देखो, अभी हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किया, वी टॉक्ड अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. व्हाट चिल्ड्रन? इन जर्मनी. सो इफेक्ट्स of the war. Got it? बहुत तरीके से
because Germany had the kind of losses that Germany had faced during this First World War. It was, really disturbing for everyone. It has a devastating impact on the entire continent. खाली जर्मनी को ऊपर असर नहीं पड़ा था. It was whole of Europe which was facing the after effects of the First World War. Participate तो कर लिया, लेकिन अब जो लॉसेस हुए दैट वॉज फेल्ड अमंगस्ट ऑल दी कंट्रीज. सारी कंट्रीज को महसूस हो रहा था गलती हो गई है. गॉट इट? एंड इस गलती का जिम्मेदार उन्होंने किसको ठहराया? यस, वीमर रिपब्लिक, विच वॉज वेरी रॉन्ग. जर्मनी को, दैट वॉज द रॉन्ग. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स. Got it? यूरोप में पहले क्या था, इतना पैसा था that they used to give loans, credit देते थे लोगों को. अब क्या हो गया, इनको कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही थी. एंड वीमर रिपब्लिक was made to pay for the sins of the old empire. Did Weimar Republic participate in the treaty in the First World War? No. Emperor had participated, enthusiastically participated. फिर भाग क्यों गए? He had to run away. ठीक है, आफ्टर. तो ये जो उनकी गलती थी, this a big mistake that Weimar Republic had, the emperor had done. उसका हर्जाना कौन भुगत रहा था? Who was paying for that? Weimar Republic. Okay. Weimar Republic was facing the wrath of First World War. Got it? And the old empire has done. Republic carried the burden of war, guilt, and national humiliation. People were, openly criticizing the Weimar Republic. क्या किया, you don't deserve, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, and these kind of things. I'm explaining in a simple language. Got it? So, अभी क्या हुआ? Weimar Republic carried the war guilt. ऐसा लग रहा था जैसे कि वीमर रिपब्लिक की वजह से ही वॉर हुआ है. ठीक है, वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, and was financially crippled by being forced to pay compensation. Remember that compensation, 6 billion livres. Oh my God, it's a big amount. तो वीमर रिपब्लिक अभी एक गवर्नमेंट बनी है. They were infant. ठीक है, एक जस्ट बॉर्न बेबी जैसे होता है ना, इनफैक्ट हम किसको कहते हैं? जस्ट बॉर्न. वीमर रिपब्लिक वॉज इमीडिएटली बॉर्न एंड वॉर गिल्ट, दे हैड टू फेस नेशनल ह्यूमिलिएशन. गॉट इट? पूरी कंट्री ने इनका बहुत मजाक बनाया. नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड फाइनेंशियली पैसे पूरे खत्म हो गए थे. सारी कंट्रीज को चुकाने में ना, सारी कंट्रीज का टू गिव all the war compensation to all the countries, the money currency in Germany was totally exhausted. Please try to understand. And financially crippled. ठीक है, नया गवर्नमेंट बनी है. इसके पहले कि दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, दे वेर फेसिंग द नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड they were paying the compensation. Now those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholic, Democrats, became easy target of the attack or in the conservative nationalist circle. Please understand. ठीक है, रिमेंबर हमने वी हैव ऑलरेडी रेड इन द रशियन रेवोल्यूशन the liberals, radicals and conservatives. Liberals and radicals were the supporters of Weimar Republic. Conservatives were the supporters of the old empire. Got it? So
Weimar Republic constituted, please understand, Weimar Republic constituted, ठीक है, of socialist, Catholics and Democrats, ठीक है, was constituted by socialist, Democrats and Catholics. Okay? They became easy target of the conservatives, the people who supported the old empire. Okay? They became easy target of conservatives. Got it? अभी क्या इस तरह की बातें हो रही थी. Please try to understand what kind of allegations were put on them. Conservatives said, और वोट करो वीमर रिपब्लिक को, और बनाओ डेमोक्रेसी, just see. And they were mockingly called the November criminals. क्या कहा गया इनका मजाक उड़ाने के लिए वीमर रिपब्लिक, the people, the Weimar Republic were called as the members of the Weimar Republic were called as the November criminals. Mindset, political development, actually 1930s में बहुत सारे changes हुए and Weimar Republic का जो मतलब please understand, they were mockingly called as November criminals. Got it? November criminals. क्राइम ऐसा कुछ किया था क्या इन्होंने सच में? Did they do any crime? No, but this is what Europe, the whole Europe was exhausted. Soldiers came to be placed above civilians, and politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, masculine. कि मर्द है तो मर्द को बिल्कुल बहुत पावरफुल होना चाहिए. Got it? They used to say, media glorified the trench life. Truth, क्योंकि अभी क्या हो गया था, soldiers lived a miserable life. Everybody wanted, क्योंकि whatever has happened, इसमें वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसमें आप सोच लो आर्मी का क्या रोल रहा होगा. How many people might have laid down their lives. Okay? लेकिन soldiers were leading a very tough life. Okay? Army life, Weimar Republic वाला तो हमने देख लिया. अभी please understand the life of the people who were working in the army. आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या था? What was the condition of the people who were working in the army? Okay? Please understand this thing. Because they participated in the war, तो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट तो सोल्जर्स की होनी चाहिए. That's for a fact. That's a fact that the soldiers should be respected and given all the respect and all the honor that they need. Need वाली बात नहीं है. They deserve that. ठीक है, the way they lay down their lives for the sake of the country, तो उतना respect तो वो deserve करते हैं. Got it, children? Please understand that soldiers are the media मतलब देखो टीवी, टेलीविजन, रेडियो. उस समय रेडियो वॉज वेरी एक्टिव. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मीडिया ग्लोरिफाइड आर्मी लाइफ. लेकिन रियलिटी क्या था ना, रियलिटी अलग थी. रियलिटी वॉज डिफरेंट. क्या रियलिटी थी? सोल्जर्स यूज टू लिव इन ट्रेंचेस. ट्रेंचेस क्या होता है? व्हाट इज ट्रेंचेस? ऑफ कोर्स डिस्कस इट विद मी इन द ऑनलाइन सेशन. ट्रेंचेस आर वो गड्ढा करते हैं ना, गड्ढे को करके गड्ढा करके उसके अंदर दे आर बेरिड. ठीक है, बेरिड क्या है? मतलब उसमें ही से ही वो लड़ाई करते हैं.
एंड रैट्स, ठीक है, गड्ढा अगर है तो उसमें चूहे आएंगे, एंड डेड बॉडी बगल में पड़ी हुई है, आप हट भी नहीं सकते हो, जैसे ही उठोगे वैसे ही सामने से गोली चल जाएगी. Poisonous gas, enemy shelling, and witness their tanks reduce rapidly. Okay? एंड क्या होता था अगर वॉर में इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो फिर आर्मी में आपको फिर पनिश किया जाता है, यू आर पनिश्ड इन द आर्मी. War propaganda was there. National honor occupied center stage in the public sphere. Public sphere में, common places में वॉर को बहुत ज़्यादा war was a war propaganda and national honor was the center stage. अभी national honor की when I am talking about, think about the national honor that people have faced in Germany. क्या था? What was the national honor? क्या हो गया था उनके respect को? Their respect was mutilated and completely finished. Okay? The soldiers faced tough life in trenches. Trenches, please understand. ट्रेंचेस हिंदी में बंकर कहते हैं, बंकर, ठीक है, वो गड्ढे करके उसके अंदर में ही पूरा उनका लाइफ होती है, सब कुछ खाना पीना सारा कुछ वहीं पे करते हैं. वॉशरूम्स जाने के लिए भी अलग से जगह बनाई जाती है जहाँ पे दे कैन गो एंड जस्ट कम बैक फास्ट. ओके, तो वॉर प्रोपेगेंडा वाज देयर एंड वॉर प्रोपेगेंडा occupied center life. ठीक है, द सेंटर लाइफ, पब्लिक स्फेयर, हर जगह पे लोग वॉर के बारे में बात कर रहे थे. पॉपुलर सपोर्ट जो है इट वॉज ग्रोइंग फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप. हाँ, democracy was young and fragile idea and they could not survive the instabilities of interwar Europe. वॉर के टाइम का ये जो एक पीरियड था ना, these people, the life in the trench, that Weimar Republic, they could not survive that. Okay, now support grew for conservatives. कंजर्वेटिव्स की जय जयकार होने लगी. उन्होंने कहा देखो हम तो वॉर में पार्टिसिपेट करके आए, ये इन्होंने क्या किया वीमार रिपब्लिक ने, और बनाओ और वोट दो, ठीक है, नाक गिरा, नाक झुका के चले आए, नाक कटा के चले आए एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो कंजर्वेटिव्स वेयर गेनिंग सपोर्ट. जब इनको सपोर्ट मिलने लगा, आगे इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड द कंजर्वेटिव्स डू? यस माय डियर चिल्ड्रन, विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. Students, some word meanings are here. I would like you to go through these word meanings. एक तो ये हो गया genocidal war. Okay. Another thing, yes, new words में all these word meanings are very clearly given. Please go through it. Another thing that you needed to do is the Weimar Republic. How Weimar Republic was found, and one thing that is very clearly given in the chapter that you need to note down is the allies and the central powers. Which were the countries in allies and which were the countries in central powers, ये आपको बताना है, डिटेल में बताना है. That is what I wanted to point it out. Another thing is the map. How after the Treaty of Versailles, just see it is mentioned here. Treaty of Versailles, you can see in this map the parts of Germany that was lost after the treaty. आप ये मैप जरूर देख लेना बच्चों, because when Hitler had come, after that
Hitler have taken back all these territories, and he has also captured the other territories which were very prominent here. Got it? Please understand that prominently, whichever territories were captured by these countries, after the treaty, after the First World War got over, he took it all back. ठीक है, ये देख लो यहाँ पे राइनलैंड, ठीक है, वेरी रिसोर्स रिच राइनलैंड वॉज देयर, ये इन लोगों ने ले लिया, फ्रांस ने ले लिया. एंड देन टुवर्ड्स प्रशिया, these places were taken away. ईस्ट प्रशिया, ये पहले वंस अपॉन ए टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ जर्मनी. ये सारे प्लेसेस जो हैं इन्होंने कैप्चर कर लिया, जिसके वजह से जर्मनी हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. गॉट इट? So this is what I wanted to show you, children. Chalo, we'll meet in the next class. Thank you and all the best to you.